Hi guys, I am Dr. Rajat and today is Super Saturday and today I am sharing a case with you for anterior implant aesthetics. We did this case 1 week back, GBR with bone grafting, and we got some good results after 1 week follow-up. Now let me take you through this particular case. Talking about this particular case, you can see Ellie's class 6. You can see the horizontal root fracture, and we did the protocol for this particular case is the GTR drilling through the root. You can see the lance drill right across and giving us a good angulation before grafting the implant, and you can see the closure, and you can see I've left the closure, the primary closure intact, so that to have the good keratinized gingiva grow there. And I always make sure that the closure between the margins aren't too tight. You can see this is a graft, composite grafting, BIOS, autogenous and PRF. So you can see after the implant I always measure the ISQ for this particular front 413 implant. ISQ is 40, and you can see the volume of this particular graft, and you can see the implant with the buccal bone was completely missing. So there are always different methods to do this particular case. So this particular case, now let me take you through the clinical front now. To this particular case, it's always nice to evaluate the cases and take the follow-up after 1 week. Now let me take you through the clinical interpretation. You can see now the buccal, you can see the keratinized gingiva and the buccal bone there, how beautiful it looks now, you can see, have a close look at it. The keratinized gingiva looks very full, the healing is superb, and now I'm going to be, you can see the occlusal view also. Just come a little closer. Yeah, so I'm just trying to make you guys see the follow-up. So it's, I'm very happy to do this particular case. So there are always challenges, that comes around when it comes to anterior implants. There are always different techniques to follow. You can do this case in a stage manner where you just only place the graft and then place the implant later on. But this was a very challenging case, and I'm very happy to have this particular healing. Missing the buccal bone and doing such a case is always a challenge, but if you plan and execute, you get good success. There are various other techniques also to do in this particular case, like socket shield if you want to prevent the buccal bone resorption, if you have intact buccal and the lingual cortical plate. So I am very happy with the healing, and we got good results. Now talking to the patient, that is very important. Yes, auntie, कैसा लगा आपको इम्प्लांट जब हमने किया था उस दौरान कैसा लगा था? मेरा तो बहुत अच्छा लगा। उस दिन कोई दर्द रहा था? हल्की सी थी। तो अब आपको आपकी स्माइल है वो वापस मिलने वाली है डेंटल इम्प्लांट से, और आई होप कि आपने जो भी प्रोसीजर कराया है वो आप कंफर्टेबल रहे। तो पेशेंट को मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केसेस को एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप केसेस के लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ ऐसे केसेस में अगर आप फॉलो अप लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज हम इन्हीं पेशेंट्स का वही क्राउन जो हमने पहले निकाला था वही लगा देंगे, और मैंने 1 हफ्ते तक वो ऐसे ही छोड़ दिया था सो दैट टिश्यू अच्छी तरह से हील हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि आप वो जो टेम्परेरी क्राउन है उसी समय लगा दें। पेशेंट को हमने एक ऐसे रिटेनर दे दिया था लगाने के लिए फॉर अ वीक, बट नाउ आई एम गोइंग टू बी चेंजिंग टू द टेम्परेरी क्राउन, एंड विद द फाइबर रेनफोर्स्ड कंपोजिट मैं वो टेम्परेरी क्राउन लगा दूंगा। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे केसेस में सक्सेस मिलता है। ये केस मेरे साथ डॉक्टर सौम्य ने असिस्ट कराया था। ये सौम्य कैसा लगा? मेरे को लगता है ये स्माइल कह रही है सब कुछ। तो हफ्ते के बाद इतनी अच्छी हीलिंग के बाद आई थिंक हमारा जो काम रहा वो साकार हो गया। तो यस, तो एंटीरियर के केसेस को आप जब एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ग्राफ्टिंग को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑटोजीनियस ग्राफ्ट के साथ एलोग्राफ्ट और xenograft जरूर मिक्स करेंगे, और PRF तो हम डेली रूटीन में अपने क्लिनिक में करते ही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमें सक्सेस मिलती है। तो मेरे उन क्लिनिशियंस को जो अभी भी सीख रहे हैं इम्प्लांटोलॉजी, और मेरे बाकी जो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स हैं, मेहनत करते रहिए, डॉक्यूमेंट करते रहिए, केस सिलेक्शन करते रहिए, और मेहनत, और जब आप करेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। तो प्लानिंग, अगर मैं तो हमेशा यही चाहता हूं कि हर केस के साथ कुछ ना कुछ मिलता है, और शेयर करने से आपको हमेशा सक्सेस मिलती है। तो मोटिवेट होते रहिए और पेशेंट्स की लाइफ बदलते रहिए, इंस्पिरेशन लेते रहिए, और बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिलेगी। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।